স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক এক বাতৰি দিব ওলাইছো মৰিগাঁৱৰ ভুৰা গাঁৱৰ যি নৃশংস হত্যা আৰু ধৰ্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ধৰ্ষণকাৰীৰ ঘৰতে উমলিছিল সেই কণমানি গৰাকী আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা এইটো কথা স্পষ্ট কৰা হৈছে যে পৰিয়ালৰ সৈতে পৰিচিত আছিল আৰু সেই ঘৰলৈ অহা যোৱা কৰিছিল অৰ্থাৎ সেই ধৰ্ষণকাৰীৰ ঘৰতে উমলিছিলে তাত খেলা ধুলা কৰিছিলে সেই দুৰ্ভগীয়া কণমানিজনে এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো দিব ওলাইছো বালিডুঙাৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডক লৈ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য আৰক্ষী অধীক্ষকে প্ৰকাশ কৰিছে পৰিয়ালৰ সৈতে চিনাকি আছিল সৈয়দ আলীৰ কেৱল চিনাকিয়ে নহয় সেই ঘৰত অহা যোৱাও কৰিছিল কন্যাগৰাকীয়ে ঘৰলৈ অহা যোৱা আছিল সৈয়দ আলীৰ পৰিচিত আছিল পৰিয়ালৰ সৈতে পৰিচিত আছিল আৰু এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ সেই ব্যক্তিজনৰ ঘৰত উমলিছিল গৈ তাত খেলা ধুলা কৰিছিল গৈ পৰিয়ালৰ সৈতে চিনাকি আছিল আৰু এই 9 বছৰীয়া দুৰ্ভগীয়া কণমানিজনীকে এনে ধৰণে অত্যন্ত নৃশংসতাৰে ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিছিল এই পাখণ্ডজনে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক কিছু তথ্য দি আছো আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ফালৰ পৰা এই কথা স্পষ্ট কৰা হৈছে আৰু মন্তব্য কৰা হৈছে যে পৰিয়ালৰ সৈতে চিনাকি আছিল দুৰ্ভগীয়া কণমানিজনী সেই ঘৰলৈ অহা যোৱা কৰিছিল আৰু সেই ঘৰত য'ত তেওঁ অহা যোৱা কৰিছিল দুৰ্ভগীয়াজনী য'ত খেলা ধুলা কৰিছিল এতিয়া সেই সৈয়দ আলীয়ে এতিয়া ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিলে এই অত্যন্ত কণমানি নিষ্পাপ সেই কন্যাজনীক আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ফালৰ পৰা তথ্য দিয়া হৈছে যে পুৱা 5:30 বজাত সন্ধানহীন হৈছিল পৰিয়ালৰ লোকে 6:30 বজাত গম পাইছিল যে সেই তেওঁলোকৰ কন্যাজনী দুৰ্ভগীয়াজনী নাই আৰু 3:30 বজাত বিয়লি প্ৰায় 3:30 বজাত বিচাৰ খোজাৰ কৰাৰ পিছত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল যেহেতু পুৱতি সম্পূৰ্ণৰূপে খুব ৰাতিপুৱাই এই দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰিছিল সেইবাবে কোনো আই উইটনেছো লাভ কৰা নাছিল আৰক্ষীয়ে আমাৰ হাতত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আহিছে মোৰ লগত নেত্ৰও আছে মোৰ সহযোগী আছে মই তেওঁৰ ওচৰলৈও যাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আৰক্ষীৰ অধীক্ষকে কি মন্তব্য কৰিলে মন্তব্য আগবঢ়াইছে जहाँ विक्टिम का घर है अक्यूज का घर है ये सब एक ही गांव के हैं और इनका तो फैमिली वाइज दोनों को जानते ही हैं और बच्ची पहले भी उसके घर जाते थे तो हर एक क्राइम में एक अपॉर्चुनिटी जो बोलते हैं क्राइम कमिट करने के लिए तो देयर वाज एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर द अक्यूज टू कमिट द क्राइम तो ये जो घटना हुए है दिस इज़ बीन अ वेरी वेरी हीनियस क्राइम एक 9-year-old माइनर गर्ल का ये हुआ है तो दिस इज़ नॉट ओनली ये पुलिस थिंग मतलब ये ओनली पुलिस सोच के ये क्राइम को हम कम नहीं कर सकते हैं क्राइम होने के बाद वी कैन इंश्योर कि हम इसको ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें और उसको लॉजिकल कंक्लूजन में लिया जाए को 8 बजे एक अक्यूज पर्सन को अरेस्ट किया है तो उसी विक्टिम के घर के पास में ही एक आदमी मोहम्मद सैयद अली मुंशी 65 ईयर्स कल रात को अरेस्ट किया है आज इसको अरेस्ट करने के बाद इसको कोर्ट में इसका प्रोडक्शन होगा उसके बाद हम कोर्ट जो डिसीजन देते हैं हम उनका पुलिस कस्टडी में रिक्वेस्ट करेंगे तो अभी तक जितना इन्वेस्टिगेशन मिला है इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो मिला है उसके हिसाब से इसका अरेस्ट हुआ है लड़की का जो वेयरिंग गारमेंट्स बाकी जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन सब अभी तक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेज दिया गया है सो एंड उसका पोस्टमार्टम भी किया गया है तो बाकी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी अपडेट है ये जो क्राइम हुआ था बच्ची जो मिसिंग हुई थी ये सुबह 5:30 बजे का टाइम के बाद बच्ची मिसिंग हो गई थी और उसके बाद जब पेरेंट्स ने ढूंढना शुरू किया अराउंड 6 o'clock बच्ची को ढूंढना शुरू किया एंड बॉडी अराउंड 3:30 मिला था तो इसके बीच में ये अर्ली मॉर्निंग टाइम था इसीलिए कोई आई विटनेस नहीं था और ये जो सस्पेक्टेड रेप के बाद बच्ची को मर्डर भी कर दिया था तो कोई आई विटनेस नहीं था इसमें तो इसीलिए ये बहुत चैलेंजिंग केस था
एंड तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अराउंड 60-65 लोगों को हमने टोटली एग्जामिन किया है, अराउंड 35 to 40 लोगों का स्टेटमेंट इसमें रिकॉर्ड किया है। तो बिकॉज कोई आई विटनेस नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमें प्रोसीड करना पड़ा। जब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का रिपोर्ट आएगा देन इन्वेस्टिगेशन का और नेक्स्ट स्टेप क्या है ये डिसाइड किया जाएगा कि आप जो बच्ची का फैमिली का प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करें। बहुत सारे वेब पोर्टल्स में ये बच्ची का नाम, बच्ची का फ़ोटो ये सब पब्लिश हुआ है। दिस इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस कि जो भी रेप विक्टिम है उसका नाम, उसका फ़ोटो, उसका आइडेंटिटी रिवील करने का कुछ भी डिटेल्स पब्लिश करना इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। स्पेशली ये एक 9 year old माइनर विक्टिम है। तो आई हम्बली रिक्वेस्ट माई फ्रेंड्स इन द मीडिया टू मेक श्योर कि फैमिली का प्राइवेसी के साथ हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और ये बच्ची का आइडेंटिटी रिवील नहीं होना चाहिए कि आप হৈছো মোৰ সহযোগী আছে নেত্ৰ অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি ক'বনে কি বুলি ইয়াক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা যাব। যাৰ ঘৰত গৈ খেলিছিলে, যাৰ ঘৰত গৈ উমলিছিলে, যি পৰিয়ালৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছিলে, সেই পৰিয়ালে এতিয়া এই নিষ্পাপ কণমানিজনীৰ কাল হৈ পৰিল। নিশ্চয় দীক্ষিত শৰ্মা ক'ব লাগিব আচলতে ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰে এটা জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। যিগৰাকী সৈয়দ আলী, এই সৈয়দ আলী বয়স 65 বছৰ, অৰ্থাৎ এই কন্যানীগৰাকী বয়স 9 বছৰ, তেওঁৰ নাতিনীৰ বয়সৰ হয়তো হ'ব। কিন্তু এই ঘটনাটো যেতিয়া সংঘটিত হ'ল তাৰপিছত ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, তাৰপিছত কেইবাটাও চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। বহুতে দাবী কৰিছে যে কেৱল সৈয়দ আলীয়ে নহয়, সৈয়দ আলীৰ পত্নী বুৱাৰীও ঘটনাত জড়িত আছিল বুলি বহুতে ক'ব বিচাৰে। অৰ্থাৎ শিশুগৰাকীক হত্যা কৰা হ'ল আৰু সেই হত্যাকাণ্ড সম্পূৰ্ণৰূপে গাপ দিয়াৰ যে এটা চেষ্টা চলাইছিল। একাংশ ৰাইজৰ মতে তাত সৈয়দ আলী পত্নী আৰু বোৱাৰীয়ে সমগ্ৰ ঘটনা গম পাইছিল আৰু তেওঁলোকে গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। ৰাইজে যেতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। আৰক্ষীৰ যিসমূহ তথ্য, আৰক্ষীৰ তথ্যসমূহৰ পৰা এইটো পোহৰলৈ আহিছে যে কিমান বেছি নিকৃষ্ট কাণ্ড সেয়া ইতিমধ্যে প্ৰমাণ হৈ পৰিছে। এই কন্যা শিশুগৰাকী, তেওঁ মাত্ৰ 9 বছৰ, তেওঁ সদায় সেই সৈয়দ আলী ঘৰলৈ হয়তো যায়। সৈয়দ আলী ঘৰৰ সৈতে এটা চিনাকি আছিল, সেই ঘৰতে উমলি জামলি থাকে, খেলা ধূলা কৰে। সৈয়দ আলীও জানে ঘৰৰ কাষৰে একেবাৰে শিশুগৰাকী ঘৰৰ কাষৰেই। গতিকে সেইদিনাখনো হয়তো পুৱা যিহেতু কোৱা হৈছে যে প্ৰায় 5:30 বজাৰ পৰা 6 বজাৰ ভিতৰত শিশুগৰাকী তাৰ পৰা নোহোৱা হৈছিল ঘৰৰ পৰা। অৰ্থাৎ তেওঁ যিধৰণে খেলিবলৈ যায়, ওলাই যায়, সেইদিনাখনো ওলাই গৈছিল আৰু পুৱাৰ ভাগত যেতিয়া ওলাই গৈছিল, একেবাৰে পুৱা আছিল, হয়তো শুৱাৰ পৰা উঠিয়ে তেওঁ ওলাই গৈছিল, তাৰ পাছৰ পৰা নোহোৱা হৈ পৰিছিল। আৰু নোহোৱা হৈ পোৱাৰ পিছত আবেলি যেতিয়া 3:30 পৰা 4 মান বজাৰ ভিতৰত একাংশ লোকে মৰাপাটৰ মাজত শিশুগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিলে। তাৰপিছতে সমগ্ৰ ৰাজ্যই ঘটনাই জোকাৰি গ'ল। পৰৱৰ্তী সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী গ'ল, ঘটনা তদন্ত কৰা হ'ল। তদন্তৰ পাছত পোহৰলৈ আহিল যে এগৰাকী 65 বছৰীয়া, এই 65 বছৰীয়া বৃদ্ধটোৱে এই জঘন্য আৰু নিকৃষ্ট কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে। তাৰপিছত তেওঁক হত্যা কৰিলে আৰু হত্যা কৰি মৃতদেহ নি মৰাপাটৰ মাজত পেলাই থ'লে। ইয়াতকৈ নিকৃষ্ট জঘন্য কাণ্ড একোৱেই হ'ব নোৱাৰে। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰাথমিক যি তদন্ত কৰিছে, কেইবাগৰাকীও লোকৰ মন্তব্যৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই সৈয়দ আলীক। আৰু একে য'ত শিশুগৰাকী খেলিবলৈ যায়, য'ত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে চিনাকি আছিল, ঘৰৰ কাষৰ এজন বৃদ্ধ যাৰ তেওঁ ককাকৰ বয়স হ'ব, আৰু সেই বৃদ্ধজনে যি নিকৃষ্ট কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে, আৰক্ষীৰ যি চাঞ্চল্যকৰ স্বীকাৰোক্তি বা চাঞ্চল্যকৰ তথ্য, তাৰ পিছত আৰু ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰিবলৈ বিশেষ একো নাই। যিটো সময়ত সেই বৃদ্ধজনে যি কৰিব লাগিছিল আৰু কি কৰি আছে, আৰু ইমান নিকৃষ্ট আৰু নৃশংস নাৰকীয় যি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল, ইয়াক ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি। আৰু সকলোৱে যিধৰণে দাবী কৰিছে যে ফাঁচি দিব লাগে, আৰু হয়তো একাংশ ৰাইজে এইকাৰণে দাবী জনাইছে এই সৈয়দ আলী পূৰ্বতে এজন ইমাম আছিল আৰু তেওঁ ইয়াৰ পূৰ্বে এনেধৰণৰ জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে। গতিকে নিশ্চিতভাৱে তেওঁক সকিয়নি দিয়াৰ বা তেওঁ ইয়াৰ পৰা তেনেধৰণৰ যিসমূহ কাণ্ড সংঘটিত কৰা লোকসকলে কিন্তু এটা বুজি উঠাৰ প্ৰয়োজন, আৰু তেওঁলোকক যেন এই ঘটনাই সংকেত দিছে আৰু এনেধৰণৰ নিকৃষ্ট নাৰকীয় ঘটনা কেতিয়াও নহওক, সেয়া কিন্তু সকলোৱে কামনা কৰিছে। দীক্ষিত শৰ্মা। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ নেত্ৰ। কিন্তু এই মুহূৰ্তত নিঃসন্দেহে এইটো এটা জঘন্য, কেৱল জঘন্য বুলিলে নহ'ব, এনেধৰণৰ ঘটনা যি ঘটনাত এই কণমানি, নিষ্পাপ কণমানিজনী যাৰ ঘৰত গৈ খেলিছিলে, যাৰ ঘৰত গৈ উমলিছিলে, যাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছিলে, সদায় ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে যাক দেখা পায়, সেইজনেই কাল হ'ল এই কণমানি, এই নিষ্পাপ শিশুগৰাকীৰ। আৰু ইতিমধ্যে তেওঁক ধোৰাগাঁও থানাত 112/21 যি গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল, সেই গোচৰত IPC US 376ত অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধৰ্ষণকাৰী সৈয়দ আলীক। আৰু এই গোটেই প্ৰসংগত সম্পূৰ্ণৰূপে আৰক্ষীয়ে নিজৰ তদন্ত বৰ্তমান অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু আৰক্ষীয়ে মন্তব্য কৰিছে যে যিগৰাকী
এই নিষ্পাপ শিশু যিগৰাকী কন্যাক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিলে সৈয়দ আলীয়ে। সৈয়দ আলীৰ ঘৰৰ ওচৰৰে পৰিয়ালৰ সম্পৰ্কও আছিলে আৰু সেই ঘৰতে গৈ সেই সৈয়দ আলীৰ ঘৰতে গৈ উমলিছিলে, খেলিছিলে। আৰু এতিয়া নিজে আপোনালোকে ভাবক কেনেধৰণৰ নৃশংস হ'ব, কেনেধৰণৰ এইসকলৰ মানুহ বুলি ক'ব পৰা যায় নে নাযায়, তাকো এটা প্ৰশ্ন চিহ্ন উত্থাপন হৈছে। পুনৰবাৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ आरक्षी अधीक्षके की मंतव्य करें। जहाँ विक्टिम का घर है, अक्यूज का घर है, ये सब एक ही गांव के हैं और इनका तो फैमिली वाइज दोनों को जानते ही हैं और बच्ची पहले भी उसके घर जाते थे। तो हर एक क्राइम में एक अपॉर्चुनिटी जो बोलते हैं क्राइम कमिट करने के लिए, तो देयर वाज एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर द अक्यूज टू कमिट द क्राइम। तो ये जो घटना हुए है, दिस इज़ बीन अ वेरी वेरी हीनियस क्राइम। एक 9-year-old माइनर गर्ल का ये हुआ है। तो दिस इज़ नॉट ओनली ये पुलिस थिंग, मतलब ये ओनली पुलिस सोच के ये क्राइम को हम कम नहीं कर सकते हैं। क्राइम होने के बाद वी कैन इंश्योर कि हम इसको ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें और उसको लॉजिकल कंक्लूजन में लिया जाए। को 8 बजे एक अक्यूज पर्सन को अरेस्ट किया है। तो उसी विक्टिम के घर के पास में ही एक आदमी मोहम्मद सैयद अली मुंशी 65 इयर्स कल रात को अरेस्ट किया है। आज इसको अरेस्ट करने के बाद इसको कोर्ट में इसका प्रोडक्शन होगा। उसके बाद हम कोर्ट जो डिसीजन देते हैं हम उनका पुलिस कस्टडी में रिक्वेस्ट करेंगे। तो अभी तक जितना इन्वेस्टिगेशन मिला है, इन्वेस्टिगेशन किया है, उसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो मिला है उसके हिसाब से इसका अरेस्ट हुआ है। लड़की का जो वेयरिंग गारमेंट्स, बाकी जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन सब अभी तक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेज दिया गया है। सो एंड उसका पोस्टमार्टम भी किया गया है। तो बाकी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी अपडेट है, ये जो क्राइम हुआ था, बच्ची जो मिसिंग हुई थी, ये सुबह 5:30 बजे का टाइम के बाद बच्ची मिसिंग हो गई थी। और उसके बाद जब पेरेंट्स ने ढूंढना शुरू किया, अराउंड 6 o'clock बच्ची को ढूंढना शुरू किया एंड बॉडी अराउंड 3:30 मिला था। तो इसके बीच में ये अर्ली मॉर्निंग टाइम था, इसीलिए कोई आई विटनेस नहीं था। और ये जो सस्पेक्टेड रेप के बाद बच्ची को मर्डर भी कर दिया था, तो कोई आई विटनेस नहीं था इसमें। तो इसीलिए ये बहुत चैलेंजिंग केस था। एंड तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अराउंड 60-65 लोगों को हमने टोटली एग्जामिन किया है। अराउंड 35 to 40 लोगों का स्टेटमेंट इसमें रिकॉर्ड किया है। तो बिकॉज कोई आई विटनेस नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमें प्रोसीड करना पड़ा। जब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का रिपोर्ट आएगा, देन इन्वेस्टिगेशन का और नेक्स्ट स्टेप क्या है ये डिसाइड किया जाएगा। कि आप जो बच्ची का फैमिली का प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करें। बहुत सारे वेब पोर्टल्स में ये बच्ची का नाम, बच्ची का फ़ोटो, ये सब पब्लिश हुआ है। दिस इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस कि जो भी रेप विक्टिम है उसका नाम, उसका फ़ोटो, उसका आइडेंटिटी रिवील करने का कुछ भी डिटेल्स पब्लिश करना इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। स्पेशली ये एक 9-year-old माइनर विक्टिम है। तो आई हम्बली रिक्वेस्ट माई फ्रेंड्स इन द मीडिया टू मेक श्योर कि फैमिली का प्राइवेसी के साथ हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और ये बच्ची का आइडेंटिटी रिवील नहीं होना चाहिए। कि आप जो बच्ची का फैमिली का प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करें। बहुत सारे वेब पोर्टल्स में ये बच्ची का नाम, बच्ची का फ़ोटो, ये सब पब्लिश हुआ है। दिस इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस कि जो भी रेप विक्टिम है उसका नाम, उसका फ़ोटो, उसका आइडेंटिटी रिवील करने का कुछ भी डिटेल्स पब्लिश करना इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। स्पेशली ये एक 9-year-old माइनर विक्टिम है। तो आई हम्बली रिक्वेस्ट माई फ्रेंड्स इन द मीडिया टू मेक श्योर कि फैमिली का प्राइवेसी के साथ हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और ये बच्ची का आइडेंटिटी रिवील नहीं हो।